आप बोलिए मैं 10 Yeah, hi, good morning, everyone. Thank you, all of you, for joining us today at our YouTube live event. The topic, obviously, is what strategy should we adopt between now and let's say the election results, and beyond that, more importantly, beyond that, उसके beyond कैसा रहना चाहिए मतलब ओवरऑल मार्केट का माहौल. एंड ऑब्वियसली हम पास्ट डेटा देखेंगे, पास्ट में क्या हुआ है, and like recent past में क्या हुआ है, and we'll share our views and everything would be backed by data. इसको थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके रखेंगे, तो प्लीज bear with us. All so we'll try and make मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स करेंगे, तो आई होप प्लीज एडजस्ट देयर. सेकंड, किसी भी स्टॉक का अगर हमने नाम लिया फॉर रीजंस कि किसी ने हमसे उसका रेलेवेंस पूछा हो, या हम किसी एग्जांपल देना चाह रहे हैं इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, कोई पर्टिकुलर थीम बात हो रही है या कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए, तो प्लीज 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 यूज इट एज अ रिप्रेजेंटेशन एंड कि एजुकेशन के लिए और रिप्रेजेंटेशन के लिए. दैट इज नॉट our recommendation. ना बाय होगा ना सेल होगा. Very important disclaimer. Do not treat any of the stocks that we speak today as possible buy or sell or hold recommendations. That's not the purpose of this webinar. That's disclaimer number two. I am joined by my colleague Amey. Between the two of us, we will have about 15-20 minutes, approximately, 20 minutes of presentation, जिसमें हम बताएंगे कि इन द रीसेंट मतलब पिछले 4-5 इलेक्शंस में कैसा रहा है माहौल. And all of that I have been personally witnessed. मैंने मार्केट देखा है in all of these elections, so I can say it with confidence, and I can say it I was right in the pit, and वो पूरा देखा है, ऐसा नहीं कि बुक से पढ़ा है और नोटबुक से पढ़ा है. So it is that. And obviously you see के अराउंड मार्केट अभी क्या लगता है, और इलेक्शंस के बाद की रणनीति क्या हो सकती है, और वो 3-4 सिनेरियो क्या है, A scenario, B scenario, C scenario, depending on number of seats. So in each of these scenarios, वो क्या market रुख ले सकता है. With that, let me just hand over to my colleague Amey, who's done a lot of hard work putting across this deck, and also trying to which ensures कि उसका meaning बाहर निकल के आ रहा है. With that, I hand it over to Amey, and he will just start with the first slide. Yeah, thank you. So we'll start with the first slide. So recently we have seen that the lower turnout, voter turnout ratio has actually caused a lot of volatility in the stock market. So what has happened is generally if we see 2019 election, then whatever the voter turnout was, currently it is lower than that. But if you see, it has no historical correlation with what the voter turnout is and how or which government will get elected. So in that way, we don't have any concerns. And if we see historically also, the VIX has been in the election period has been always above 20%. So in 2024 election period also, we can see that the volatility is above or the India VIX is above 20. Coming to the next slide, we'll see each of the election years and the scenario, what has happened during the election result day, pre that and post that. So this is so this is 2004. So here what had happened was the expectation was that NDA would get re-elected. But what happened was that actually UPA won the election, and it was against the consensus call. So you can see on the right hand corner in the table, the NDA, it was expected that they would get around 250 to 290 seats, but they actually ended up getting around 189 seats. And that caused a lot of volatility in the market, and the stock markets went down 19% in the next 2 days. But keeping this in mind, if you see the right-hand side chart, in the next 6 months, the market recovered and actually delivered 9% returns. And if we see on a 12-month period, then the market actually gave a 16% return. So in spite of that 19% volatility, and we can say a downturn, in the 6 and 12 months, actually we got positive returns. So even in those kind of cases where the election, whatever was expected, the completely opposite happens, in that kind of extreme case also,
the volatility, remained, continued to decline over the period, and actually the market gave positive returns. Next, we'll see 2009. So here the expectation was that UPA will get re-elected. And what actually happened was that the number of seats that people were expecting were around 190 to 220 kind of range. But actually they got 262 seats, which was way more than what was the expectation. In that case, so the election result came on a Saturday. So on the next Monday, the Nifty actually went up 17% in one single day. And actually it was there was a circuit limit, and that's why the day ended there. In that kind of scenario also, you can see that actually the performance was actually better than if we see in 2004. So here we can see that market actually gave 36% in a 6 months period and 39% in a 1 year period. Now, if you see, go back to the pre-election, whatever the returns were, then we can see that in the last 1 year, actually it gave minus 28% returns. And that was actually because of the global financial crisis. And we were coming out of that. Hence the rally you can see where in the pre-election result period, in the 6 months, it gave actually 31% returns. Now coming to 2014, here if we see, everyone was expecting that NDA will get re-elected. NDA will actually get the majority, and the expectation was also the same. And what happened was that whatever the expectation was, that were met, and the exit poll were actually better than what was expected. And hence you can see when the exit poll result came in the left hand side corner chart, you can see when the exit poll result came, that market actually rallied 4 to 5%. In the green box that I have highlighted, you can see that rally what has happened. And actually, when the result came in on 16th May, market actually went up intraday 5% up, but then closed around 1% for the day. And the market was actually doing pretty well, so it continued on that uptrend because the actual results was in line with what the expectation was. Coming to 2019, it was everyone was expecting that the NDA will get re-elected, and they got re-elected, and the number that people were estimating, the actual number was more than that in terms of the number of seats. And hence, when the exit poll results came in, the market actually rallied 4 or 5%. And then when the actual result came on 23rd May, the market actually went up intraday, but then closed minus 1% down for the day. Here also, if we see on the right hand side, the 6 months and 1 year returns, then we can see that pre-election, the markets were doing considerably okay. And on the 6 months and 12 months period, there was a kind of range-bound activity. And actually, because of COVID on the 12-month period, we had negative returns. But actually, it had nothing to do with the elections. So let's see what are the scenarios for the 2024 elections, what can happen. So here are the three various scenarios that we are seeing, and we see how it might play and how it might affect the markets. So first scenario is that NDA will get more than 325 seats. Second scenario is that they will get between 272 to 325 seats, which is still they will have the majority, but still the number of seats would be lesser than what people are estimating. And scenario number 3 would be less than 272 seats. So in the scenario 1, we are saying that if India gets more than 325 seats, then there will be reforms in the land, labor, and agriculture segment. And the government will continue on the fiscal consolidation and macroeconomic stability. And there will be continuity in the policy. In the scenario 2, we are seeing that if that plays out, where India could get 272 to 325 seats, in that kind of scenario, there could be a decline in the markets a little bit, but then there will be a consolidation, and again the uptrend would continue. And same impact on the macro policies and the reforms front. Now the scenario 3 is interesting because here we are saying that what if the India gets less than 272 seats? In that kind of a phase, we expect that there could be a major decline in the markets,
But then, as we saw in the 2004 slide, that there was a decline in the market, but in 6 and 12 months, we had actually positive return. So here also we are expecting the same. There could be a knee-jerk reaction where the markets could decline a bit, but again, there could be some consolidation, and again the uptrend would continue. So what if 400 par? BJP is saying that they are, envisaging that that NDA should will have more than 400 seats. So what will happen in that kind of a case? So majority in the Lok Sabha will help majority, BJP or NDA get majority in the Rajya Sabha. And what this will do is there will be a smooth passage of legislation and amendments that the government would want to do. Currently, what is happening is that in the lower house, which is the Lok Sabha, the NDA has a majority, but in Rajya Sabha still they don't have the majority. And if we see the BJP's manifesto, what they have mentioned in the 2024 BJP manifesto, then we can see that these are the various pointers on which they would want to work. So main one would be to make Bharat third largest economy, then the CAA bill, one nation, one election, uniform civil code, free ration, global electronic manufacturing hub by 2030, and free electricity for the poor households. So just to round up all this, you can see that in majority of the cases, the market have actually given positive returns, no matter what the results were. In only 2 cases, we had negative returns pre and post results. That was because more of the macroeconomic situation and less to do with how the elections had panned out. So with this, we are seeing that before election in 2024, markets are given 13% of returns and 24% returns on the 12-month period. And we have to see how the markets perform in the next 6 and 12 months. With that, I will hand it over to Jasprit sir for the next few set of slides. Scenarios. Yeah, thank you, Amay. Let me ये same message let me brief and थोड़ा हिंदी में share करते हैं. तो 3 सिनेरियो की बात हो रही है यहाँ पे. सिनेरियो 1 एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अब ये 325 है, 350 है, 400 है, 450 है, इट्स ऑल द सेम, राइट? और उसको हम सेम क्यों बोल रहे हैं, शो द नेक्स्ट स्लाइड. बट यहाँ पे बड़े रिफॉर्म्स पास हो सकते हैं जो आज के दिन में अटके हुए हैं, राइट? विच इज लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, एग्री रिफॉर्म्स, एंड ऑल्सो 2-4 और ऐसी चीजें हैं जो अगले स्लाइड पे मैंने दिखाई थी, विच इज if you just go to the next slide away, यहाँ पे citizenship amendment act, which is one nation one election, uniform civil code, ये सारे थोड़े रिफॉर्मिस्ट मेजर हैं. तो चाहे वो डीमोन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, ये काफी सारे रिफॉर्मिस्ट मेजर्स गवर्नमेंट ले पाई है 2019 से, एक्चुअली 2016 से टिल डेट. उसी तरीके के ये सारे अब ये थोड़े डिबेटेबल भी हैं कि कुछ लोगों को नहीं लगेगा, बट देन हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं. बट लार्जर मैसेज कि 325 से उनका प्रेजेंस राज्यसभा में और अच्छा हो जाएगा, 400 में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उससे एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाएगी राज्यसभा में भी जब समय आएगा. आई थिंक मोस्टली 2026 में वो होगा जब उनका समय आएगा. तो राज्यसभा लोकसभा इज अबाउट 543, जिसमें 272 और मोर चाहिए होता है मेजोरिटी के लिए. राज्यसभा इज अबाउट 245, उसमें 121 के आसपास चाहिए होता है. वो भी इनके पास नहीं है, वो कुछ 4 सीट शॉर्ट है. तो अब वो जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा राज्यसभा के लिए, तो इनको मैंने से इनको आई मीन दी एनडीए गवर्नमेंट को वो मिल जाएगा मैंडेट अगर 400 आए. तो दैट इज द ब्रॉडर मैसेज फ्रेंड्स, कि ये सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स पास हो सकते हैं, इजीली पास हो सकते हैं बहुत लिमिटेड अड़चनों से, अगर वो 400 और क्लोज टू देयर अबाउट आ जाएंगे. जस्ट गो बैक. तो नेट तो 325 हो, 350 हो, 400 हो, बड़े मैसेज जो बड़े रिफॉर्म्स हैं उस पर इंपैक्ट पड़ेगा. जो रोज की मार्केट का माहौल है, जो रोज का कंपनी के अर्निंग्स हैं, ना वो इस गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट आने से फर्क पड़ने वाला है कि भाई जो स्टील कंपनी और एन ऑटो एंसिलरी कंपनी और an IT कंपनी और फार्मा कंपनी 90% to 99% ऑफ द ईपीएस ऑफ दैट कंपनी वो बिगड़ेगा नहीं, राइट? विच एवर गवर्नमेंट कम्स, अब चाहे वो 272 सीटें हो या 372 सीटें हो, वो नहीं बिगड़ने वाला, राइट? एंड वो ये मैं मतलब ऐसा नहीं कि हवा में बात हो रही है, पीछे हमने देखा है, राइट? 2004 में भी जब गवर्नमेंट बदल गई थी ओवरनाइट, स्टिल जो ईपीएस थे वो ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स की वजह से जरूर बदलते हैं, कंपनी के अंदर की जो उनके इश्यूज हैं या अच्छी चीजें उसकी वजह से जरूर बदलते हैं.
सेंटर लेवल पे पार्टी ए या पार्टी बी उससे कम बदलता है, दैट्स अ लार्जर मैसेज। तो अब वो अगेन टू समराइज 325 350 400 इट जस्ट डजंट मैटर, इट इज जस्ट लाइक इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 2020 में, 2009 में, 1993 में जीता था, और इन बिटवीन 2011 में वर्ल्ड कप जीता। मुझे नहीं पता कि कोई किसी को भी याद होगा हम कितने मार्जिन से जीते थे, कितने रन से जीते थे, कितने विकेट से जीते थे, इट जस्ट डजंट मैटर। उस दिन के बाद अगले दिन से वो डिस्कशन ही नहीं होता है कि हम 4 विकेट से जीते थे, कि हम 6 विकेट जीते थे, कि हम 10 रन से जीते थे, कि हम 100 रन से जीते थे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था हाथ में कप आना, और वो आ गया था इंडिया के, राइट, बी 1983, बी 2011, बी 2009, राइट। एंड ऑब्वियसली होपफुली टचवुड इस साल भी आ जाएगा इन यूएस। बट सेम लॉजिक हियर, लार्जर मैंडेट है 300 और मोर, एंड दैट्स अ लार्जर मैंडेट। अब वो आगे पीछे होगा, दैट्स ओके, राइट। द लास्ट जो कॉलम है, वो सिनेरियो में मार्केट थोड़ा करेक्ट हो सकता है टेम्पररली, अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, बट वो नी जब होगा, अगेन आई एम गोइंग बेसिस पास्ट हिस्ट्री, वो नी जब होगा, राइट, एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कि वो उस मौके का फायदा उठाएं, रादर देन साइड में बैठ के घबरा के अपना एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बेच के चले जाएं। वो नहीं करना है, राइट। कहीं किसी भी टाइप का नीजक रिएक्शन आता है, चाहे एक दिन का आता है, चाहे 2 घंटे का आता है, चाहे वो 2 दिन का आता है, ऑब्वियसली वो हाइंडसाइट में ही पता चलेगा कि 2 घंटे का था या 2 दिन का था। बट ये हमने लार्जर मैसेज यहाँ पे दे दिया है कि रेड वाला होगा तो इमीडिएट रिएक्शन आएगा, मार्केट कंसोलिडेट करेगी एंड फिर अप मूव लेगा। सिनेरियो बी में अगर वो उतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आती, तो साइडवेज करेक्शन स्ट्रोक कंसोलिडेशन आ सकता है, जो रेड डॉटेड लाइन में दिखाया गया, एंड देन अपवर्ड मूवमेंट आएगा, राइट। एंड ऑब्वियसली ग्रीन अगर रहता है, विच इज एवरीथिंग इज गुड, देन धीरे धीरे मार्केट अपना बेसिस नॉर्मल फंडामेंटल्स ऊपर बढ़ सकती है। या नाउ लेट्स कम टू यस, सो जस्ट अ सेकंड हियर। सो इसमें इस स्लाइड में भी आप ये देखिए कि जस्ट 2 times इन द पास्ट मार्केट हैज रिएक्टेड। एक तो एक्चुअली जो प्री इलेक्शन था, तो इतना एंड that was in 2009, but and obviously and recently जो आफ्टर इलेक्शंस का जो इम्पैक्ट था, वो 2009 में हुआ था, जब वो द लेमन क्राइसिस के आसपास हुआ था। एंड रिसेंटली ऑब्वियसली कोविड की वजह से वो -23 दिख रहा है, बिकॉज एग्जैक्टली वी आर इन द मिड्स ऑफ कोविड, विच इज May 19 से जब स्टार्ट हुआ, और May 20 में जबकि ये -23% दिखा रहा है। तो ये 2 बड़े इवेंट्स की वजह से ही माइनस माइनस दिख रहा है, वो भी बिफोर एंड आफ्टर, अदरवाइज ये भी नहीं होना था। तो इसको ध्यान में अगर रखें, तो इट डजंट लुक लाइक कि जो क्वेश्चन मार्क है, जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे आज से 6 महीने बाद, आज से 12 महीने बाद इसी टेबल में, इट डजंट लुक लाइक यहाँ रेड होना चाहिए। 99% यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। अब वो कितना पॉजिटिव होता है, वो 5% होता है कि 15% होता है कि 20% होता है, दैट टाइम विल टेल, एंड दैट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन टू kind of guess and do a calculation and position themselves accordingly. तो इस सब को ध्यान में रखे, आई थिंक what we want to summarize is the next slide, which is what my feeling or our feeling is कि markets this could be a trending thing on various media. The markets be like on June 4, which is the day of the election verdict, नई सरकार या पुरानी सरकार, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे यार, राइट। दैट्स अ मैसेज वी आर ट्राइंग टू से कि निफ्टी का तो अपने लार्जर फंडामेंटल ड्राइवर से आगे बढ़ते रहना है। अब वो टेम्परली एक स्टॉप लेके फिर आगे बढ़े, या उसी समय वहीं से बढ़ जाए, या थोड़ा सा नीचे लेके फिर आगे बढ़े, तो लार्जर उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर ही है। एंड वो निफ्टी ने दिखाया भी है, राइट। आप लास्ट 5, 10, 15, 20 साल का निफ्टी CAGR उठा के देखेंगे, तो वो 13, 14, 15% के रेंज में रहा है, राइट। एंड देयर इज नो रीजन वो रेंज बिगड़ेगी अगले 5-10 सालों में, इनफैक्ट सुधरने का ही ज्यादा कारण है। नेक्स्ट स्लाइड। एंड वो क्यों है, वो भी हम देखते हैं। अभी हमने देखा येस्टरडे ओनली निफ्टी ने ऑल टाइम हाई किया अपना, बोथ सेंसेक्स एंड निफ्टी बोथ 75,400, एंड निफ्टी ने 23,000 का आंकड़ा पास किया। तो अब इतने हाई लेवल पे डर जरूर लगता है बाय करें, तो वो डर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो हम उस पर बात कर रहे हैं फॉर अ मिनट, विच इज द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें द लार्जर मैसेज ये है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन्स एक्यूट अटेंशन हियर। ओवर अ 1 year पीरियड, अगर मार्केट हाई पे रहता है, तो चांसेस ऑफ अ नेगेटिव रिटर्न इज 27%। अब आप 1 साल का अगर व्यू लेंगे तो चांस इतना है 27%। हाउएवर अगर आप 5 साल का व्यू लेते हैं, इवन दो द मार्केट इज एट अ हाई, देयर इज ओनली अ 4% चांस कि आप मार्केट में लूज करेंगे। अब 4% चांस लूज करने का तो वो तो बहुत ही कम है, मतलब 96% चांस तो विन करने का ही है।
राइट। अब नीचे आते हैं, लास्ट सिनेरियो देखते हैं, विच इज कि ग्रेटर देन 40% का चांस क्या है रिटर्न आने का, राइट। ओवर अ 1 ईयर पीरियड 9% है, तो कोई कहेगा ये 9% तो चांस बहुत कम है, ठीक है, कम है, कोई बात नहीं। बट 5 ईयर में देयर इज अ 69% चांस दैट द मार्केट, ओके, दिस इज निफ्टी, ओके, एंड हम तो यहाँ कोई मतलब 99% ऑफ द पीपल आई एम अज्यूमिंग हु आर वाचिंग टुडे एंड हु विल एंड अप वाचिंग दिस वीडियो विल बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो उनके लिए तो हम निफ्टी खरीद नहीं रहे, इंडेक्सेस ले नहीं रहे, हम तो इंडिविजुअल स्टॉक्स ले रहे हैं। तो अगर निफ्टी ही 40% जाएगा ऊपर ओवर अ 5 ईयर पीरियड, एंड दैट इज अ 69% चांस, आई थिंक द इंडिविजुअल स्टॉक्स को ओवर अ 5 पीरियड 100%, अप टू 100% ऊपर जाने का जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा होगा, 80 90 100% होगा। एंड विद दैट होप, एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस एंड दिस डेटा, one can invest even at a higher level. That's the message of this slide. दिस इज फंडामेंटल। 23,000 पे मार्केट का हमें क्या समझता है, तो हम ऑब्वियसली ईपीएस और पी सही देखते हैं। तो 18 20 22 टाइम्स अगर हम पी मार्केट जो देते हैं, वी आर मोर इन दैट 20 to 22 टाइम्स, सिंपली बिकॉज ऑब्वियसली हिस्टोरिकल बैंड कोई दो राय नहीं है, हम 18 से 20x के रेंज में रहे हैं, बट इंक्रीमेंटली हम 20 से 22 के रेंज में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, जो हम दो स्लाइड बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी उसमें क्यों वो रीजन है। बट यहां से भी इवन एट 23,000 निफ्टी लेवल, यहां से भी 6 से 17% की एक्सपेक्टेशन बनाई जा सकती है, का एक्सपेक्टेशन लिया जा सकता है। एंड आई एम अगेन कमिंग बैक, ये दो चीजें, ईपीएस इंटू पीई है। ईपीएस है वो लो डबल डिजिट ईपीएस सीएजीआर, अगेन दिस इज फ्रॉम वेरी बिग ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, जो निफ्टी का ईपीएस है, और वो यही बोलते हैं कि 12-13% ऑन अ लोअर साइड एंड मे बी 15% ऑन द हायर साइड ईपीएस सीएजीआर होना चाहिए अगले 2 सालों का, मतलब मार्च 24 लेके मार्च 26 तक। अगर अगर वो 12-13% भी होता है तो ये अप टू 17% अपसाइड देखा जा सकता है ऑन अ निफ्टी फ्रॉम अ 1 ईयर परस्पेक्टिव। तब तक FY26 डिस्काउंट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली कमिंग बैक, वी आर नॉट बाइंग निफ्टी, बाइंग इंडिविजुअल स्टॉक्स जो ऑब्वियसली 17% से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। सो मूविंग ऑन टू द ओके, और क्या कारण है मार्केट के अंदर फंडामेंटली, तो वेरियस, अगर आप इसे इसे हीट मैप बोलते हैं ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो आता रहता है। अब वो जीएसटी कलेक्शन तो सब देखते हैं, राइट, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ हो गया है, और वो कंटिन्यूसली उसी रेंज में चल रहा है, एंड वो 10-12-15% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ दिखा ही रहा है मंथ ऑन मंथ ऑन अ YOY बेसिस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, विच इज वेरी हेल्दी। सीपीआई कंट्रोल में 5% के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगेन दैट कुड बी डिबेटेबल, थोड़ा वो आजकल सुर्खियों में आया है, कल भी थोड़ा आईआईटी, लॉट ऑफ आईआईटीज में 8,000 लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, वो एंड वो ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, बट देन इट्स नॉट अ वेरी, आई वुडंट से इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। ऑब्वियसली वो न्यूट्रल जोन में जरूर होगा। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग हेल्दी है, सर्विसेज हेल्दी है, और कंपोजिट भी हेल्दी है। पीएमआई मीन्स की आपका जो इंडेक्स है ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग साइड ओवरऑल, अगर हम उसको 100 लें तो मंथ ऑन मंथ वो कैसा मूव कर रहा है, अगर वो 50 के ऊपर रहता है इट मींस पॉजिटिव, एंड अगर उसके नीचे जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये आप देखिए तकरीबन तकरीबन सारा ही ग्रीन है। नेक्स्ट स्लाइड में अगेन सेम चीज है, बट कुछ और पैरामीटर्स हैं। ई वे बिल है, एयरपोर्ट्स का है, तो ये थोड़े से येलो जोन में ज्यादा है, ग्रीन में है, और रेड वाले बहुत कम है, बट लार्जर एज लॉन्ग एज हम लाइट येलो, डार्क येलो और लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन जोन में है, तो इट इज नॉट अ, मतलब वो बहुत ज्यादा चिंता का टॉपिक नहीं है। स्टील कंजम्पशन, सीमेंट कंजम्पशन, गैस कंजम्पशन, पावर जनरेशन, ये सब 6-8-10% की रेंज में है, विच इज ऑल डिनोटिंग कि सब तरफ एक्टिविटी गुड से वेरी गुड है, और कई जगह एवरेज है, पुअर कम देखने को मिल रहा है। तो ऑल दीज आर अगेन फंडामेंटल रीजंस कि हम इवन एट 23,000 इंडेक्स, निफ्टी लेवल 75,000 सेंसेक्स बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। नेक्स्ट, FIs आर बी नेट सेलर्स, बट अब बियॉन्ड अ पॉइंट इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इंडिया का SIP फ्लो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, 20-21 हजार करोड़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है। जो लमसम होता है वो इतना इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, बट जो SIP इतना स्ट्रांग है, एंड इवन अदरवाइज PMS और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जैसे आज अभी जो ये सारे लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, उन सबका इन्वेस्टमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो फर्क ही नहीं पड़ता है कि FIs नेगेटिव रहें या उनका इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है सो फार। ऑन द कॉन्ट्ररी, मार्केट पे इम्पैक्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये FIs कल को बाइंग करने आते हैं, राइट, एंड अ मेजर लेवल, एंड अ लॉट ऑफ देम आर
आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द इलेक्शन बिकॉज दे डोंट वांट कि उन्होंने इन्वेस्ट किया और एक इवेंट की दे आर हैप्पी। इन लोगों को लार्ज कैप ही लेना है और लार्ज कैप्स में से इनके फिक्स्ड हैं 8 10 15 नाम ऑन अ हायर साइड 20 नाम, तो वो उधर ही, और वो बहुत ज्यादा चले नहीं है, सो दे आर नॉट वेरी स्केर्ड एंड देयर एफआईएस के साथ ये जरूर है कि उनको लिक्विडिटी ज्यादा दे आर मोर इन फेवर की लिक्विडिटी ज्यादा हो वर्सेस रिटर्न 8 10 15% निकल भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता उनको। सो एनीवे, सो लार्जर पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे कि यस ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 16% के आसपास इनका होल्डिंग है द ओवरऑल एफआई ओनरशिप एट अ ऑल इंडिया एट अ मार्केट लेवल एंड विच इज अ डेकेडल लो, मतलब 12 साल का लो है। देखिए दिसंबर 12 से अभी तक का नंबर आप देखें तो तकरीबन तकरीबन वो सेम आ रहा है उनकी जो ओनरशिप है, विच मीन्स, और ये पीक में ऑब्वियसली 20% गया हुआ है। तो 20% जो पीक में था वो इट इज बैक टू 16%, एंड देर इज नो रीजन वाई इट कैन गो डाउन फर्दर, बट देन कितना ही नीचे जाएगा एक टाइम के बाद तो इट हैज टू कम बैक, तो ये भी ऊपर आना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है, अगेन वील सी इट द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो दो कारण है। एक तो इमर्जिंग मार्केट में एफआई सेलिंग कर रहा है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक सेलिंग, ये इमर्जिंग मार्केट की सेलिंग है जिसके अंदर इंडिया भी आ जाता है। तो इंडिया का अगर उस इमर्जिंग मार्केट में मान लीजिए 10% का रोल है, सो ऑब्वियसली टू दैट एक्सटेंट इंडिया में सेलिंग हो रही है। दूसरा है कि जो यूएस यील्ड्स हैं वो जो 4.5% है, दे आर नॉट रिलेंटिंग, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मीनिंगफुल राइट, वो छोटा मोटा उनका जो ऊपर थोड़ा होता है दैट इज ओके, बट मीनिंगफुल नीचे नहीं आ रहे हैं, जो बाय नाउ आ जाना चाहिए। अगर हम 8 महीने पहले 9 महीने पहले अगर जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके फोरकास्ट को देखें, तो अक्टूबर नवंबर में जब हम ये सुनते थे फेड का अपडेट एंड जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वहां के, यूएस के गोल्डमैन हो, मॉर्गन हो या बैंक ऑफ अमेरिका हो, सब बोल रहे थे जून जुलाई तक पहला रेट कट आ जाएगा ऑन अ वर्स्ट केस राइट, और बीच में शांति रहेगी। तो शांति तो है बट वो रेट कट नहीं है, और इनफैक्ट अभी ऐसी बात चल रही है कि अक्टूबर नवंबर में आएगा, अगर आया तो हो सकता है इस साल आए ना। तो और थोड़ा टाइम पहले 3 रेट कट्स की बात हो रही थी, और भी तो नेट नेट जो दी यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो बहुत स्टैटिक, बहुत स्टेडी हो गई हैं, वो नीचे आने का नाम ले रही है। उसकी वजह से भी जो फ्लोज हैं वो इंडिया में उतने आ नहीं पा रहे हैं। अगर उनके यहाँ इतनी अच्छी यील्ड है तो फिर इंडिया में वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे। पहले इन प्री कोविड सिनेरियो उनकी यील्ड कुछ 2% के आसपास हुआ करती थी, और आई मीन इन एक आधा सिनेरियो में 1.5% भी थी, 1.5% राइट, और इंडिया में करीबन 6.5 7% था। तो जो दोनों के बीच में जो गैप था वो 5 5.5% था। आज दोनों के गैप में उतना फर्क नहीं रह गया, दे आर एट 4.5, वी आर एट 7 राइट, सो इट्स ओनली 2.5% गैप राइट। अब 2.5% के लिए अब उसमें करेंसी फ्लक्चुएशन भी होता है राइट, यू लूज यू इंडिया में आएंगे अब करेंसी लॉस होता है राइट, आप 83 में आएंगे और जब निकालने जाएंगे तो 86 87 हो जाएगा, तो 2.5 3% वहां नुकसान हो जाता है। तो ले दे के उनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। सो नेट नेट दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी नंबर। एज एंड व्हेन द इंडियन बॉन्ड यील्ड्स करेक्ट स्लाइटली, लेट्स से 25 50 बिप्स, बट यूएस यील्ड गोज डाउन ड्रास्टिकली, लेट्स से 200 बिप्स, फिर वापस एक इमर्जिंग फ्लो स्टार्ट हो सकता है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी थोड़ा इमर्जिंग मार्केट सेलिंग ज्यादा हो रही है। तो पुट टुगेदर आई थिंक दिस इज एंड ऑब्वियसली उसके सारे कारण है। सबको अपने यूएस वालों को अपना खुद की कंट्री में डालना ज्यादा बेटर लगता है, ज्यादा सेफ लगता है, एंड ऑब्वियसली जो ऑयल का इम्पैक्ट है वो इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया जैसी कंट्रीज में ज्यादा होता है, एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ऑयल पे इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ता है। Yeah, moving on quickly, we'll wrap it up in 2 minutes. तो ये एक समरी स्लाइड है कि हम एफआई कमबैक इज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड रादर देन इफ। तो अगर आप राइट साइड देखें बाय मार्केट कैप, रिसेंटली हम $5 ट्रिलियन बन गए ऑल इंडिया मार्केट कैप, सारी लिस्टेड कंपनीज ऑब्वियसली, जो कंपनीज लिस्टेड नहीं है और जो कल को लिस्ट होंगी वो सब बाद में आएंगी, बट फिलहाल हम $5 ट्रिलियन पे आ गए हैं राइट। ऑल इंडिया जितने कंपनीज लिस्टेड हैं, लेट्स से 5,000 बीएससी है प्लस माइनस, उसको आप ऐड कर ले मार्केट कैप, दिस इज व्हाट इट कम्स टू, एंड वी रिसेंटली टच $5 ट्रिलियन एंड वी आर एट नंबर 5 राइट, विच इज अ वेरी। अब ले देके अगर टॉप फाइव ग्लोबल मार्केट्स में अगर किसी एफआई को इन्वेस्ट करना है तो इंडिया ऑब्वियस चॉइस है राइट। छठे स्थान पे तो फ्रांस है, एंड देयर इज अ बिग गैप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस राइट। एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप देखेंगे इट मे बी अ मैटर ऑफ 1 year और मे बी स्लाइटली मोर कि हम नंबर 3 पे आ जाए, बिकॉज द जर्नी फ्रॉम 5 to 5.6 मे नॉट टेक अस टू मच टाइम। इसमें बेनिफिट ये होता है कि हमारे कंपनीज इतनी ज्यादा लिस्ट होती रहती हैं, वो सब इसमें ऐड होता रहेगा राइट। तो अप्रिसिएशन का जो इसमें रोल है वो एक है, बट नई कंपनी जब लिस्ट होंगी उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि जापान 5.5 का 5.5 पे ही रहेगा, बट दैट्स एन अजम्पशन। बट अगर वो ऊपर चला भी जाता है तो भी इवन इफ इट्स एट 5.9 और 6,
द मोमेंट वी बिकम 6.1 तो हम नंबर 3 पे आ जाएंगे। नंबर 3 पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अब वो कहेंगे कि यूएस तो 50 बिलियन ट्रिलियन है, हम फिर भी 6 हैं, बट देन ऑब्वियसली हर चीज का समय होता है, इट टेक टाइम, बट वी शुड कम देयर वेरी वेरी सून। एंड व्हेन आई से वेरी वेरी सून, हमारे पार्लेंस में लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स का मतलब होता है साल, 2 साल, 3 साल, वो हमारे लिए वेरी वेरी सून होता है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, $1 ट्रिलियन, एंड वी हैव, मतलब ये तो all of you know, we are at again number 5 there as well. 3.9, almost 4 के आसपास हो गए हैं, and again it's a matter of year or 2 years where again we become, actually 2027 का target है, but I think it could be achieved, there's a possibility we could achieve in 2026 as well. Instead of March 26 में भी हम नंबर 3 बन सकते हैं। तो नेट नेट बाय मार्केट कैप एंड बाय जीडीपी साइज नंबर 5 पे ऑलरेडी है, नंबर 3 पे हम मूव कर रहे हैं। मे बी इन 1 year, मे बी इन 2 years, मे बी 2.5 years हम पहुंच जाएंगे। तो the amount of flows FIs के पास आज फिर भी they can afford to not invest in India, थोड़ा remain on the sidelines, but then they will have no choice, they will have, क्योंकि सारे वेटेजेस, वो जो एक पॉइंट लिखा है, कि जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस हैं उसमें इंडिया का वेटेज बहुत बढ़ जाएगा। द मार्केट की जो इंडिया की डेप्थ है और ब्रेथ है वो बहुत स्ट्रांग है, वो हेल्प करता है। वी आर द फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अगर टॉप 100 लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड उठा के देखेंगे तो। और स्टेबल गवर्नमेंट होपफुली अभी तो है, एंड होपफुली जून 4 के बाद भी वैसा ही रहना चाहिए। एंड द जियोपॉलिटिकल फैक्टर, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहे हैं उसमें सो फार इंडिया हैज लार्जली बीन इंसुलेटेड, राइट। वो छोटे मोटे स्कर्मिशेस चलते रहते हैं विद पाकिस्तान और चाइना, बट दे बीन लार्जली बीन इन कंट्रोल, कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया जो पिछले 2-4 सालों में आए हैं, और उससे थोड़े से पहले भी आए थे। तो दैट्स ब्रॉडली दी समरी दैट अभी तो एफआईज इंडिया में है नहीं उतने लेवल तक, दे हैव ओनली 16% ओनरशिप। कल को वो अगर बड़े पैमाने पे अगर आ जाते हैं, देन दैट कुड बी अ बिगर बिगर icing on the cake, and that could be a bigger lift to the overall market. I think that's the last slide. Yeah, so I think to summarize, and there were people who were asking us the summary. So to summarize the 3 scenarios which we gave, that is one summary कि किसी भी सिनेरियो में मार्केट नीचक रिएक्शन करता है या साइडवेज रहता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो प्लीज पोस्ट जून 4 और जून 4 को use that as an opportunity to remain calm, settled, and put incremental money in case you're sitting on 5-10% cash, and there is no harm to be on 5-10% cash even today in case you are, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बेचने की जरूरत नहीं है। use that money, no need to get ruffled, and अगर वो मौका नहीं मिलता है, वो नीजक नहीं आता है, just then you are 100% invested. There's no reason to, किसी भी सिनेरियो में घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। Again, I'm saying for a long-term investor, which is 1 year, 2 years, 3 years, at least in that range. Near term, obviously, volatility रहेगी. The swing traders, the FNO traders, उनके लिए शायद जून 4, 5, 6, 3 दिन, in fact, the whole week could be very, very volatile. So that I think that's a different game altogether. We don't understand that game as such. Our larger area of expertise and strength and advice, and where we lie is long term investing, जहाँ पे 2-3-4 साल का व्यू लेते हैं। तो we are largely there. It helps in the long term wealth creation. That's a larger mandate that we have. With that, let me just take a pause. We'll take some questions from the live chat box, and we also have some questions which we've received beforehand. So let me just request Samay to stop the presentation and just take up read out some questions from the live chat, and he can answer some of them himself. हमें आप खुद भी directly पढ़ सकते हैं, मतलब जवाब दे दें, या you can ask some of them to me. Yeah, over to you, man. Yeah. So we have got some questions before the webinar. So we'll take 1 or 2 of those, and then we'll move to the live questions. So many of our clients and investors have asked us, which sector will do well if the current government gets re-elected, because we have seen that in the last 10 years, the markets have done well, and the government has focused on infrastructure, energy, and those kind of emerging sectors. So if the government gets re-elected, then where and which sectors could do well? Okay, so yeah, thanks. So I think अगर वो
majority, absolute majority बनती है of the current government, and it चाहे वो 280 हो, 300 हो, 320, 340, 380, whatever. And by the way, what I'm hearing from whatever the experts that I have heard so far, I mean I've heard met so far, the mandate could be in the range of 300 to 350, right? 400 looks to be an एकदम outlier, while anything less than 300 would as of now also looks to be an outlier, because as of now तो कितना 300 लास्ट गवर्नमेंट के 322 सीटें तो हैं ही इनके पास. हाँ, तो मतलब ये, और ये एनडीए की बात हो रही है, बीजेपी की बात नहीं है, एनडीए की बात हो रही है. तो एनडीए की अगर 350 के रेंज में रहता है, तो द करंट सेट ऑफ themes should have merit to continue. And what are those? Which is defense, railway, manufacturing, defense, railway, manufacturing. That is one, the China plus one. The broad consumption theme, जो discretionary consumption है, उसमें वो हमें बहुत अच्छी लगती है. The GDP per capita, we are at $2,500. वो हम $6,000 के आसपास पहुंच जाएंगे 4-5 सालों में, over a period of 5 to 6 years. That theme is something that we like. And the PSUs, PSUs also is something that is there. So ये broadly positioning हो सकती है short term के लिए, but long term obviously the only two sectors that we are underweight and we believe थोड़ा और टाइम अंडरवेट हो सकता है, रह सकते हैं. एंड अगेन व्हेन आई से अंडरवेट, आई मीन निफ्टी के कंपैरिजन में. ऐसा कोई हमें बहुत नेगेटिव व्यू नहीं है, बट हम जस्ट सेइंग निफ्टी के कंपैरिजन में हमारी अंडरवेट पोजीशनिंग है, एंड बहुत बड़े अंडरवेट नहीं, थोड़ा सा अंडरवेट है. सो वन इज एफएमसीजी. सो एफएमसीजी हम बहुत बड़ा हमारा कोई ऐसे 15-20 नाम कोई ऐसा रैंडमली ले नहीं पाएगा कि वो मल्टी बैगर्स बने, तो हमें मल्टी बैगर्स के हिसाब से देखना होता है. तो एफएमसीजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम थोड़े से अंडरवेट हैं. एंड सेकंड इज बैंक्स ऑब्वियसली कुछ 35-36% वेट होगा निफ्टी में, पीक में 42-43 होता था. So that we would be about less than 30% or closer to 25%. तो so when I say banks, I mean the entire BFSI space. वो lending भी आ गया, नॉन लेंडिंग भी आ गया, BFSI बैंकिंग भी आ गया, NBFC भी आ गया, सब मिला के. So these are the two under so-called underweights, and the another two pockets which could be close to neutral to mildly underweight, वो IT और फार्मा है, क्योंकि ये ग्लोबल सेक्टर्स हैं, उसमें ले दे के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं है. तो ये चार सेक्टर्स को अगर आप अलग कर दें, तो जो बाकी के क्षेत्र रह जाएंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो, राइट. सो एंड ऑब्वियसली कंजम्पशन हमने बात कर ली है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की, एंड प्लस डिफेंस, रेलवे, PSU एटसेट्रा, मैन्युफैक्चरिंग, चाइना प्लस वन कंजम्पशन, ऑल दैट वी आर इज द डेक. वो एक सारा बकेट है जहां पे हम वी आर फेयरली पॉजिटिव फ्रॉम अ 1 to 2 years from a 1 to 2 years perspective. Yeah. So another question that we have got from our clients is that if they have, let's say, some cash that they want to deploy in the markets, would this be the right time to invest, and how should be the allocation? So allocation कैसा होना चाहिए कि let's say 10% cash में बैठे हैं, तो वो कैसे डिवाइड करे, प्री एंड पोस्ट इलेक्शन या पूरा ही पोस्ट में रखे? So on that question, I will just say that the इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 4 जून को आने वाला है. तो टिल दैट टाइम वैसे भी ज्यादा दिन है नहीं, इट इज ओनली 10 days. So for investors who have that kind of cash and want to deploy in the market, तो 10 दिन तक we can see कि रिजल्ट क्या आता है, एंड उसमें जो भी है, लेट्स से इवन इफ द करंट जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करती है, तो इन दैट काइंड ऑफ केस डेफिनेटली दे कैन remain invested with their existing money and they can also freshly deploy. क्योंकि वो सिनेरियो में हमने देखा है कि उसमें कुछ नीजर रिएक्शन आना नहीं चाहिए if करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, गेट्स री इलेक्टेड. तो वो केसेस में पोस्ट इलेक्शन ऑफ कोर्स यू कैन अगेन डिप्लॉय दैट मनी. एंड इन केस इफ लेट्स से देयर इज सम एडवर्स सिचुएशन वेयर द करंट गवर्नमेंट सीट जो है उनके नंबर ऑफ सीट्स कम आते हैं या लेस देन 272 सीट्स आते हैं, तो वो काइंड ऑफ केसेस में तो डेफिनेटली देयर कुड बी सम नीजर रिएक्शन. तो नीचे के लेवल्स में देन दे विल बी एबल टू डिप्लॉय दैट कैश. सो if you have the fresh capital and cash 10%, let's say you are sitting in currently, so in that kind of scenario we'll say कि wait for 10 days because election का result 4 जून तक आ जाएगा, and post that you can deploy whatever fresh money you want to deploy in the markets.
And sector related to Jasprit sir had already mentioned his view on which sectors could do well if the government gets re-elected and how we are positioned our portfolio. So taking cue from that, then we can definitely position our portfolios accordingly. Thank you. Thank you, Amay. Let me just take up some live questions. विजय वरुण जी का सवाल था बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट. हमने अगेन हम लाइव चैट से ही ले रहे हैं प्री और पोस्ट इलेक्शन. सो अगेन बेस्ट टाइम नहीं, इट्स नॉट अ बेस्ट टाइम कि अभी करें बाद में करें. लार्जर मैसेज, अगर आपके पास 50 lakhs हैं टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, आई वुड प्रिज्यूम कि आप ऑलरेडी 80-90% इन्वेस्टेड है टिल डेट. जो बैलेंस है यू कैन होल्ड दैट ड्राई गन पाउडर एंड पोस्ट इलेक्शंस यू कैन इन्वेस्ट इन अ स्टैगर्ड मैनर. बट अगर ऐसा सिनेरियो है कि लेस देन 50% इन्वेस्टेड है, लेट्स से यू हैव 50 lakhs और क्लोज टू देयर अबाउट, and you've only invested 50% or even lesser than that, जो balance 50 lakhs है और balance 25 lakhs or 50%, you can stagger it over the next, I would say 6 weeks or yeah closer to that. उसमें आपको ये वीक भी मिल जाएगा which is pre, which is post, एक बाद में, और बाकी का टाइम भी मिल जाएगा. तो एग्जैक्ट टाइमिंग मत करने बैठिए, वो कोई नहीं कर पाया है, एंड दैट इंक्लूड्स द बिगेस्ट ऑफ फंड मैनेजर्स. तो उसमें टाइम करने की जरूरत नहीं है. रिन्यूएबल एनर्जी पे व्यू सत्यनारायण जी, सो या वी हैव अ पॉजिटिव व्यू देयर, बट उसमें देयर इज इंक्लूडिंग ईवी, उसमें काफी इनोवेशन हो रहा है, काफी there's a lot of events happening there in terms of a lot of companies, बहुत कंपनीज कह रही हैं हम काफी कुछ नया कर रहे हैं, काफी डिफरेंट कर रहे हैं, हम ही ऐसा इनोवेशन ला रहे हैं जो और किसी के पास नहीं है. वो प्रूव करना बियॉन्ड अ पॉइंट मुश्किल हो जाता है. इट बिकम्स डिफिकल्ट कि किसको चेक करें कि ये सही है और ये यही बड़ा बड़ा खिलाड़ी बनेगा इस क्षेत्र में. तो लार्जर मैसेज देर कि हम देख जरूर रहे हैं, बट एकदम प्योर अंदर जाके ओनली रिन्यूएबल का शायद ना कर पाए, बट लेट्स से सम प्रॉक्सी जो रिन्यूएबल को भी अपना एक सामान, अपना प्रोडक्ट देता है, एंड प्लस मेनी अदर सेक्टर्स को, दैट कुड बी वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. एक वैसा देख सकते हैं. और वी कुड जस्ट लुक एट ए ब्रॉडर एनर्जी सेक्टर जिसके अंदर रिन्यूएबल एक पार्ट है, राइट. सो उसके अंदर भी उसमें लिफ्ट मिल जाएगा. तो नेट इट बी मोर लाइक अ मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न रादर देन हाई रिस्क हाई रिटर्न, बिकॉज ये क्षेत्र बहुत ज्यादा vulnerable है to be under down and under. When there's a विकास वरुण जी पूछते हैं अगला elite conclave, yes we'll hold that very soon, इसी साल होगा, and we are obviously waiting for the right time. It should happen in the next few months. So for people who are our audience, our customers, so Equintis Research and Ranking, we hold annual elite conclaves for our privileged customers who are premium customers, and that happens once in a year in a hotel, in a 5-star hotel, in a setup where full day sessions we have of presentations, including some guest sessions, guest speakers aate hain, and we share whatever our views are, thematics, and we have live questions or one-on-one chats hoti hain. So anyway, so that's what, just to put things in context, because so that everybody is on the same page for that. एक क्वेश्चन है अमित कुमार जी का, FIs are selling, how much Nifty can move up? So I explained, Amit Kumar ji, कि Nifty FI selling or not selling, Nifty has already moved up 26% in the last 1 year. It has moved up 16% in the last 6 months, plus minus exact मुझे ध्यान नहीं है. तो and this is despite FI selling. तो आप सोचिए FIs अगर बाइंग करेंगे तो क्या होगा, right? तो no need to worry there कि अगर एफआईएस कंटिन्यूअसली बेचते रहेंगे तो निफ्टी ऊपर कैसे जाएगा. निफ्टी अपने दम पे ऊपर जा रहा है, डोमेस्टिक फ्लोज के ऊपर जा रहा है, दम पे जा रहा है, एंड ओवरऑल पॉजिटिविटी के ऊपर जा रहा है. बेस्ट सेक्टर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड हाउ मच टू इन्वेस्ट. जून 4th वाले वीक में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, डू द स्टैगरिंग, डू नॉट टाइम करने से बहुत यू माइट गेट दैट शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन कि मेरा टाइमिंग सही है, बट वो शॉर्ट टर्म आपकी जो टेम्पटेशन है वो दैट विल रिजल्ट कंपल्सरी रिजल्ट कि आप नेक्स्ट टाइम भी टाइम करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद थर्ड टाइम भी करने की कोशिश करेंगे, और जो सेकंड थर्ड फोर्थ होगा या थर्ड फोर्थ फिफ्थ होगा उसमें नेट पैसा होया जाएगा, विच विल बी फार हायर देन द गेन दैट यू मेड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड अटेम्प्ट. तो ले दे के ये कुछ हाथ में आने नहीं वाला. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके I mean this is again there the people who are very very lucky and who are very very talented and who are very very out of the world. हम उस 0.1% लोगों की बात नहीं कर रहे, 99.9% लोग टाइमिंग नहीं कर पाते हैं. And that's a fact, that's our experience, and that's what we have read, and that's what we have heard globally, including the best fund managers, including even Mr. Warren Buffett.
That's and should we sell now and book profit? Jaydeep Patel जी is asking. नहीं सर, वो मतलब क्यों क्यों बेचना है? प्रॉफिट क्यों बुक कर रहे हैं? अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है. So just let's ride on that journey. Defense and railways view from a 10-year perspective. Ruchir Agarwal ji is asking. Yes, we are positive, right? I said defense, railway, PSUs, manufacturing, China plus one, broad industrial capex stories, infrastructure, real estate, building materials. We are positive from a long-term perspective. Let me just hand over to Amey to check if he has any questions he would like to on the live on the live. Amey, you have anything on the live, or you want to take up on the from the pre session questions? Yeah. So one of the pre session questions that we have got, and that was something interesting, was since elections are going on in so many countries, around 60 odd countries, and with the biggest one being of India, and followed by in November elections in US. So in that kind of a scenario, what could happen? So some questions were there regarding that. And other was, if we could reiterate, because a lot of people have concerned that what will happen if, let's say, BJP doesn't get re-elected, then what could be a scenario? So we have already covered that. Maybe some of the clients and some of our viewers have come in a little bit late. So if you could cover that again. And we have seen that in 2004, what has happened if, the consensus view doesn't hold. So if you could reiterate on that. या सो यूके इलेक्शंस अभी रिसेंटली अनाउंस हुए, आई थिंक जुलाई में कुछ है. तो नेट यूके से हमारा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है. सच यूएस में जरूर फर्क पड़ता है, बट व्हाट वी हैव सीन इज एंड ये रियल मतलब इंसिडेंस है कि 8 साल पहले व्हेन यूएस वाज अबाउट टू गो इनटू इलेक्शंस एंड देयर वाज अ फियर कि Obama would go out and Barack Obama and obviously he would lose, and there was a fear that Donald Trump will come, and Donald Trump आएंगे तो बड़े बड़े एडवेंचर स्टेप्स लेंगे, और इंक्लूडिंग सम स्टेप्स विच विल बी डेट्रीमेंटल टू इंडियाज दिस थिंग. तो मार्केट में सेलिंग देखी गई थी, और इनफैक्ट मैंने पर्सनली और मेरे मेरे इससे पहले जहाँ पे मैं था वहां पे हम लोग ने थोड़ा बेरिश व्यू लेके काफी सेलिंग का व्यू बना लिया था. बट वो जो व्यू था वो इन हाइंडसाइट गलत निकला, बिकॉज ट्रम्प डिड डेफिनेटली कम, बट उनके आने के तुरंत बाद वो जो मार्केट ऊपर गया है, एंड इट जस्ट डिडंट टेक अ ब्रीदर. सो वो जो हमारे जितने भी शक, हमारे जितने भी हमारा जो डर था, it all ended out to be a false alarm, and it was just not warranted is what we learned, right? अब फिर से अगर डोनाल्ड ट्रम्प आ जाते हैं, कुछ भी गवर्नमेंट, इट जस्ट डजंट मैटर, राइट? फॉर एन इकोनॉमी लाइक इंडिया एंड फॉर इवन फॉर एनी और ग्लोबल नेशंस, उनको इंडिया से एंड इंडिया को भी इनके साथ बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखने हैं, बोथ on the financial side, economic side, as well as on the political side. So be it Israel, be it Iran, be it Russia, be it US, China, or Europe, we've largely been cordial with almost all the countries. And हमारा इतना trade impact नहीं हुआ in the last 8-10 years as such. So whichever government comes, whichever it just doesn't matter beyond a point. So that is what I would say. इंडिविजुअल क्वेश्चन, सॉरी, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे टिप्पणी नहीं कर पाएंगे. आई एम वेरी सॉरी, अरुण शर्मा जी एंड सो मेनी अदर्स जो who've been hoping कि हम करें. But yes, we would definitely like to do a similar session in the future, wherein we would we will be dedicated to this particular topic. Individual स्टॉक्स पे हम उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, थोड़ा डीप डाइव हम जरूर करना चाहेंगे. एंड उसमें हम ऑब्वियसली बाय होल्ड सेल नहीं बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिकमेंडेशन नहीं दे पाएंगे, वो हम आज ही बता रहे हैं. सो दैट वी डोंट गेट डिसअपॉइंटेड व्हेनेवर वी डू सच अ सेशन, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अलाउड. जस्ट नॉट, ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं है, हम आज हम हमारा वो नहीं है, राइट? जस्ट इट्स नॉट अलाउड फ्रॉम अ सेबी कंप्लायंस पर्सपेक्टिव, एंड ऑब्वियसली we are governed, Equintis Research and Ranking, we are governed by rules, regulations, and obviously the body SEBI doesn't permit us to go deeper into stock specific and to give recommendations in an open forum like this, because उसमें रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं हुई है. हमें नहीं पता आपका टाइम होराइजन क्या है, हमें नहीं पता आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितना है, हमें नहीं पता आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है, हमें नहीं पता आपकी एज क्या है, हमें नहीं पता आप कितने टाइम से इक्विटी मार्केट में है, राइट? हमें नहीं पता आपके डिपेंडेंट्स क्या है, हमें नहीं पता अगर कल को मार्केट 10% गिरेगा तो आपका बीपी कितना शूट अप होगा, 120 टिका रहेगा, 80 120, या 120 वाला 180 हो जाएगा, वी डोंट नो, right? So for all those reasons, it's not allowed. Anyway, so
largely auto, to touch upon, since you asked, no need to we'll still have, we'll give you still some bite. Autos and auto ancillary, we are fairly positive. Within that, we are positive on companies जिनका EV में थोड़ा सा contribution है, maybe 10-20% है, आगे जाके 40-50% हो सकता है. And they are kind of, तो चाहे वो थोड़ा सा हाइब्रिड कर रही हो, चाहे वो, so there are companies, जो पूरा डीजल में है, अवॉइड. ओके, देयर आर कंपनीज जो पेट्रोल एंड डीजल है बट थोड़ा ज्यादा डीजल है, अवॉइड. ओके, कंपनीज विच आर more petrol, little bit hybrid, little bit EV, या आ जाएगा. That is what we would prefer. Yeah, and that doesn't mean कि वो CVs होगा तो obviously diesel ही होगा. But from a 5-year view, from a 3 to 5 year view, less of diesel, more of hybrid, more of EV रखेंगे, and neutral on petrol का बेस रखेंगे. तो चाहे वो CVs हो, EVs हो, टू व्हीलर्स हो, I think that's the way to go. That's I would say the, and थोड़ा बहुत global exposure रहेगा तो ज्यादा अच्छा है. When I say that, the export story, the manufacturing, the China plus one, हमने देखा है कि काफी areas में, in fact one space where we are very positive is the manufacturing space, electronics, जहाँ पे companies which are manufacturing, becoming a hotspot manufacturing base for global giants like Samsung, LG, Nokia, and more importantly Apple. And so चाहे mobiles में हो, laptops में हो, consumer electronics हो, TV, fridge, refrigerators, washing machines, all other appliances, those spaces would be very interesting. Pharma sector view. So we are, Satya Narayan ji is asking pharma sector view. Sir, we would be, I think, neutral to positive, and obviously given the market environment, जहाँ पे Nifty 23,000 पे, it does make sense to have little exposure to pharma, because sooner than later it will come out. And select stocks already अच्छा कर रहे हैं. There's already वो लोग select stocks already अच्छा कर रहे हैं. And I think if one can take a 2 to 3 year view, there is every reason to believe कि फार्मा एक अच्छा क्षेत्र बन के निकलेगा, और वो उसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे, बिकॉज अब वो फार्मा अकेला नहीं रहा, उसमें सीडीएमओ भी है, उसमें उसमें डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस भी है, उसमें एपीआई स्टोरीज भी है, उसमें हेल्थ केयर भी है, उसमें डायग्नोस्टिक्स भी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं. एंड इंडिया इज डूइंग फेयरली वेल, और जो यूएसएफडी के जो इश्यूज हैं वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गए हैं. सो that's also happening at the same time. Railway stocks are highly valued, defense stocks highly valued. Yes, that's true. Hemant Jain, sir, that's true. But that's a fact, right? I mean, so just a bite there, just a point there. किसी भी कंपनी का अगर आप पी देखें तो साथ में ग्रोथ जरूर देख लें, पीजी निकाल लीजिएगा. सो जस्ट क्विक एग्जांपल, दो कंपनीज हैं, दोनों का पी 40 है. 40 ऑब्वियसली महंगा लगेगा डिफेंस रेलवे के लिए. तो एक कंपनी अगर 20% पे ग्रो कर रही है, सो जो पीजी है, दैट विल बिकम 2. द अदर इज, लेट्स से, ग्रोइंग एट 40%, उसका पीजी हो जाएगा 1. तो जो lesser than 1, PG is always good. The best PG is less than 1. Between the two अगर देखना है, दो कंपेयर करने on the same P, तो PG जिसका कम है, obviously वो आप ले सकते हैं. All things being equal, when I say that, promoter quality, overall balance sheet quality, overall opportunity, market opportunity, दोनों के लिए बराबर है, and everything being equal. if सिर्फ इसी पे बात अटकी हुई है तो फिर ये इस तरीके से आप उसको evaluate कर सकते हैं. Let me just market will correct before result. Ayash Sheikh is asking, no sir, why should it correct? I mean, वो एक ही हफ्ता रह गया by the way, but हाँ correct कर भी सकते हैं. 2-4% तो भी normal correction है. मतलब हम तो we are used to 2 to 4% correction. So next week volatility के लिए जरूर तैयार रहिएगा, बट जो बड़ा volatility रहेगी वो स्टार्टिंग 4 जून ही रहेगी. इनफैक्ट 3 जून से ही आ जाएगी, बिकॉज फर्स्ट की रात को जो फर्स्ट लास्ट फेज है, आई थिंक 7th फेज, लास्ट फेज, उसी दिन लास्ट रात को करीबन 7 बजे के आसपास से एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और जिसका इम्पैक्ट पॉसिबली इंडिया मार्केट को 3rd, विच इज अ मंडे, उसको देखने को मिलेगा. बट जो बड़ा इम्पैक्ट, तो वहां से वोलेटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी. तो बट जो बड़ा इवेंट है ऑब्वियसली 4th, उस दिन बड़ा होगा, एंड दैट वीक मे कंटिन्यू टू सी दैट बिगर वोलेटिलिटी. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी केस बियॉन्ड 2-3%, मैक्स 4% करेक्शन बिफोर रिजल्ट. तो एक ही हफ्ता रह गया ब्रॉडली, तो आई डोंट थिंक टू मच
रह गया वहां पे. Let me just take up couple of live questions and portfolio. Hmm. And a lot of people, Ravish Soni ji, thank you so much for all your kind words. He's saying I'm attached with research and ranking for the last 4 years and very happy with their services. And a lot of other people who also expressed satisfaction, appreciation, and gratification for our good work and the services. And obviously, a lot of credit goes to a lot of the backend team, the research team, the all the operations, customer service who थोड़ा backend में ज्यादा रहते हैं, but a lot of thank you and a lot of wishes goes to them as well. So on your behalf, we can pass on the message. Individual stocks would go up and down. Our limited request, a suggestion would be please portfolio level पे देखिए, and do not हर stock को हर quarter हर महीने pressure zone में मत डालिए, नहीं तो वो it will just not help. So and individual stocks, steel companies, metal companies पे comment करना मुश्किल होगा. So it'll be difficult in this session specifically. So as I said, metal stocks, cement stocks, real estate, a lot of these are high risk, high return. Be very wary of that. Mindful रहें इस चीज को लेके, उसके बाद invest करें, by all means करें. And new tech है, renewable है, EV है, right? Again, all those are high risk zones, and put money, but maybe less than 10% of the portfolio. That too over multiple stocks, and not like 10% आपने दो stock में डाल दिया. Maybe over 4-5 names, and that to stagger your investments, and assume कि इसमें high risk कुछ bomb होंगे और कुछ एकदम high flyer होंगे, and take a long term view. By all means, then do it. But if you are less risk and cannot withstand volatility, avoid going into those space unless you are trying to do with our advice. Then obviously we can. So overall, Abhishek Bhattacharya is asking, overall, if government fails to come back, जो CAGR है कितना बिगड़ सकता है, चाहे हमारे पोर्टफोलियो का जिम्फ्री को. So Abhishek ji, again, as I said, 5, 10, 15, 20 years, शायद 25 years भी करेंगे तो भी वही निकलेगा. The Nifty CAGR has been between 13, 14 and 15%. 13 to 15% की range में रहा है, and there's no reason to believe next 5 and 10 years CAGR should be any different. On a worst case, I think it could be 13%, and on a realistic base, it could be 15%. And God knows, if we are number 3 by market cap, by GDP, flows are very good. And I'm talking about 5 to 10 year picture. The flows are very good, right? And the political setup is benign and it is stable, right? And we are progressing well. We are on that path of 6, 7, 8% GDP growth. We for all we might be growing at a CAGR of even higher than 15%. Again, this is Nifty. Individual portfolios like ours, or like many HNIs and PMSs and mutual funds, they obviously will be growing faster. Typically, a very broad this thing is that mutual funds and PMS are in the range of 3 to 5% alpha over Nifty, over Nifty, 3 to 5%, or let's say 3 to 6%, very broadly. Our aspiration is to do more than that, which is let's say 6% or more, higher than Nifty. I mean, more in the range of 6 to 10% alpha over Nifty, and happy to share we've historically been able to achieve that, again at a portfolio level over a period of time, on a 1 year basis. And a lot of these things are already there on the website, so do visit the website for larger details. Given this is not a marketing session, we just want to spend more time on taking up some of the questions. Let me just hand over to Amay to check for if he wants to answer any of the questions himself, and I'll get a 2-minute breather. Yeah, sure. So one question that I saw was around budget, because 2024 का जो Feb का budget था, that was the interim budget. But once the election happened, then there will be another budget that will be happening in June. So from that point of view, what is the view, what can happen? So हमारा इधर अभी
तो ये व्यू है कि ओवर द पास्ट 2-3 years वी हैव सीन कि गवर्नमेंट का जो फिजिकल कंसोलिडेशन का व्यू रहा है, दे हैव वर्कड ऑन दैट पाथ कि ओवरऑल डेफिसिट कम होना चाहिए इंडिया का. एंड आई थिंक इन द जून बजट ऑल्सो, और जून जुलाई जब जब भी वो प्लान होगा, तो इन दैट बजट ऑल्सो दे विल कंटिन्यू ऑन दैट फिजिकल कंसोलिडेशन प्लान एंड रिफॉर्म्स नए जो बजट में अनाउंस किए जाते हैं, they will be announcing on those plans. But we don't expect anything big to happen in this budget. Most probably, whatever they would want to announce, they would be announcing in the Feb budget next year. But अभी के लिए तो जून का बजट के हिसाब से तो we only see that they will continue on that fiscal consolidation plan. Some of the questions that have come in are more from the sector point of view. Which sector could do well, or which industry we could focus on post the results. So we have already answered those questions. So maybe after the recording is uploaded, you can take a look at that. I'll just see if we have 2 more questions coming in. Some people are asking if is there any way to hedge the portfolio. I mean, from that point of view, we don't see any reason to hedge the portfolio. I mean, अगर हम इन्वेस्टर्स है और हमारा 3 या 5 साल का व्यू है, तो ये 1-2 दिन का जो वॉलेटिलिटी है उसके लिए हेज करके इतना, उसके लिए वी डोंट थिंक इट मेक्स सेंस. एंड हिस्टोरिकली भी हमने देखा है, इन स्पाइट ऑफ द रिजल्ट जो भी आते हैं इलेक्शन के, जो कंसेंसस व्यू है वैसा ही अगर रिजल्ट आता है या अगेंस्ट भी आता है कंसेंसस के, स्टिल शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है. इंडिया विच 20 के ऊपर रहता है, बट ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months वो वॉलेटिलिटी खत्म हो जाती है. मार्केट्स अगेन कंटिन्यू देयर अप ट्रेंड बिकॉज इंडिया के फंडामेंटल्स ही वैसे है. हम जो पोजीशन में अभी फ्रॉम डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिफॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग, जैसे यूएस चाइना वो कर रहे हैं या अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज क्या कर रही है, उसमें इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट. एंड वो फंडामेंटल्स के वजह से दैट लॉन्ग टर्म स्टोरी इज ऑलवेज गोइंग टू प्ले आउट इन स्पाइट ऑफ कौन सा गवर्नमेंट इलेक्ट होते आता है. तो ऐसे पॉइंट में हेज करके फॉर लाइक 2-3 days डजंट मेक सेंस. दैट इज आवर व्यू. You focus on the long term, focus on the 3 and 5 year story, and be stock specific and continue to be invested in the markets. So yes, sir. So with that, I will hand it over back to Jasprit sir. Few last questions if we want to take any. Yeah, so we'll just take up last few questions and then wrap it up. So PSU Bank's view is Neve's asking. Yeah, we are positive on that space. Obviously, जो अब कंसोलिडेशन के बाद 10 ही नाम रह गए हैं, तो उसमें से जो टॉप 5, 6, 7 नेम्स में से उसमें से 2-3 में हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोजीशंस हैं हमारे क्लाइंट्स की. ऑब्वियसली वी लाइक दैट स्पेस एंड नो रीजन कि वो आगे जाके भी अच्छी नहीं करेगी. आई थिंक इट्स कम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम. आई थिंक 2003, 4, 5 में जो वेव था उसके आसपास तो नहीं, बट उसके इट कुड बी समथिंग सिमिलर. स्टील सेक्टर पे व्यू नित्या इज आस्किंग. सो it's I would say it's more under evaluation, frankly. We have not finally formed up our view. We are yet to, but it's not negative and as well as it's not very very positive. So valuations महंगे हैं थोड़ा, इसमें बस ये ध्यान रखने वाली बात है. FMCG पे we are underweight, negative. Yogesh Sinha is asking. Sectors we are targeting, we've already discussed. NBFC sector, obviously it is under challenge. That's Amey Ketkar is asking. So it is under difficult times. It will continue to be in difficulty for some more time because of RBI. कभी किसी बैंक पे, कभी किसी NBFC पे, recently मुथूट फाइनेंस पे, मुथूट फाइनेंस ऐसा सच नहीं, बट वो गोल्ड लोन फाइनेंसर्स पे था, कोटक बैंक पे आया था, बजाज फाइनेंस पे आया था, HDFC बैंक पे आया था, राइट. RBL पे आ चुका है इन द पास्ट, राइट. IFL पे रिसेंटली आया है. So there is continuously some thing or the other happening in some NBFC or bank कि वो ये follow नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं. तो I think थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है उस space में. Do not put more than 3-4%, I would say, in a mid cap, small cap, and do not more than 5% in large cap in a BFSI.
And our sense is maybe 25, max 30% exposure. But that's including lending. अगर आप सिर्फ प्योर BFSI lending, दो बैंक्स, दो एनबीएफसी बहुत हो गए, नहीं तो मैक्स 3 बैंक और एक एनबीएफसी और एक या दो आई वुड से नॉन लेंडिंग. सो कुल मिला के 6 स्टॉक एंड मैक्स 4%. अगर आप एवरेज लेंगे तो 24%, 24% आई वुड से 24-25% could be the exposure one can have on BFSI. And so far, we've been having this stance for the last 1, 2, 3 years, and I think we've largely gone right. इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कुछ ऐसा बहुत सारे वनली पैकेज निकलते नहीं है, and it's overly crowded and not too much. Again, I'm just repeating, portfolio level पे approach जरूर देखिए. Do evaluate at a portfolio level and do not get clobbered down कि हर स्टॉक पे पिछले 5 जो हमने स्टॉक दिए हैं और हर स्टॉक में हर महीने रिटर्न, और लेट्स से कोई स्टॉक का मैंडेट है 1 साल में रिटर्न देने का, तो उसको ऑब्वियसली 1 साल देना पड़ेगा. 1 साल नहीं तो 9 महीने देने पड़ेंगे, तो 6 महीना देना पड़ेगा. बट अगर पोर्टफोलियो आज ही बनाया है और 2 महीने बाद सारे के सारे चल पड़े, तो सर सॉरी, दैट्स नॉट, दैट हैज नोबडी, कोई भी नहीं अचीव कर पाया है. तो लॉट ऑफ पीपल माइट बी दिस थिंग कि यार अभी एंड लार्जर मार्केट जरूर चला है, बट जो ब्रेथ है अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है. एंड अगेन आई एम सेइंग, पिछले 6 महीना 1 साल के रिटर्न्स देखिए, डू नॉट बिल्ड एक्सपेक्टेशन कि अगले 6 महीना 1 साल उतना ही स्ट्रांग रहेगा. बाय विच आई मीन, Nifty is up 26% in the last 1 year. Small cap is up, sorry, mid caps is up, I think 50% plus. Small cap is up some 65%. अब अगर हम सोचते हैं कि अगला 1 साल भी इतना शानदार रहेगा, वो नहीं होने वाला. या सो वेरी हाई चांस कि वो नहीं होगा, rather than saying नहीं होने वाला, वेरी हाई चांस. because it just doesn't happen कि हर साल उतना ही magnificent return आए, उतना सिंपल, उतना इजी, उतना प्रेडिक्टेबल अगर होता तो फिर देन ऑल ऑफ अस वुड बी बिलियनर्स. एंड देन फिर बैंक में एफडी कराने को जाता ही नहीं, सब फिर इक्विटी मार्केट में सारा पैसा डाल देते. इतना ही अगर प्रेडिक्टेबल और एक्यूरेट और बेस्ट रिटर्न्स अगर इक्विटी मार्केट में आ रहे होते तो. द लार्जर टाइम फ्रेम में क्या होता है, 5 year पीरियड, एज आई सेड, निफ्टी 15%, मिड कैप मोर लाइक 20% प्लस, एंड स्मॉल कैप मोर लाइक 25% प्लस माइनस, उस वैसे रेंज में रहता है. तो that's what the broader thing is. And then you make a basket and you get a return which is, let's say, 20 to 30% in that range, or at a portfolio level, which is also our broader sense that individual portfolios can do over a long-term period, if they are going the right way themselves, or they are associated with financial advisors like us. We do not have any view, Akshay Hinglaji, on copper. Gold पे I would say again we don't have any view, but अभी geopolitical tension की वजह से gold 62 का 72K हो गया है, शायद 75K हो गया है. But otherwise, but no harm in putting 5-10% separately in gold as a hedge to currency, as a hedge to equity asset, and as a long-term investment. Because gold has been equally lucrative in the last 5, 10, 15, 20 years, and it has given double-digit CAGR return in the last 10, 15, 20 years. So no reason why 5% plus minus. अगर कोई मीडियम रिस्क है तो मे बी 10%, अदरवाइज हाई रिस्क है तो 5% प्लस माइनस रखने में कोई बुराई नहीं है. I mean, we do not do it personally because obviously we live equity day in day out and we read that, तो इसलिए हमारा थोड़ा बायसनेस आ जाती है. बट इफ यू गो एंड आस्क अ गोल्ड ETF फंड मैनेजर, ऑब्वियसली वो आपको वही सजेशन देंगे कि या वेल्थ मैनेजर, वेल्थ एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानिंग सर से बात करेंगे, ऑब्वियसली एडवाइस करेंगे. एंड देयर इज नो हार्म डूइंग दैट. वी आर नॉट सेइंग डू नॉट डू इट. Let me just, so we'll wind up in 5 minutes. It's been a great session. We'll just wind it up in 5 minutes. A lot of things that we do, that we think, please keep in mind, we might change our view 3 months later, 6 months later, 1 year later, because वो थीम में कुछ या तो कुछ अड़चन आ गई है, कुछ डिसबैलेंस हो गया है, वो स्टॉक में कुछ हो गया, बिकॉज ऑफ विच वी माइट चेंज आवर व्यू, वी माइट डू सम रीबैलेंसिंग. हम कुछ कर सकते हैं, करेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट एट अ पोर्टफोलियो लेवल, एट इक्विटी रिसर्च एंड रैंकिंग. डू नॉट हैव दैट थिंग कि हमने एक बार अगर व्यू बना लिया तो अब हम चेंज कैसे जी हम वो स्टॉक को बेचे क्यों, राइट? डू नॉट हैव दैट. बी फ्लेक्सिबल. द ओनली थिंग, एंड दैट्स अगेन that's what we learned from big, I've learned from big fund managers, including Mr. Samir Arora, who says this famous thing: the biggest strength should be to be flexible, right?
आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको आगे लेके जाएगी कि भाई कोई हमारा फिक्स नहीं, यही हमारा टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के बारे में कुछ टच ही नहीं करेंगे. The moment you start doing that, you will have, I mean, there are enough PMSs. In fact, the top 3 PMS में अगर आप देखें तो उसमें से कई नाम, top 10 PMS उसमें कई नाम by size, not by performance, top 10 उसमें कई नाम ऐसे मिलेंगे जो जो बहुत रिजिड है अपने अपने अप्रोच में, इसलिए उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत भी सब पार है अक्रॉस टाइम पीरियड्स. एंड सेम इज ट्रू विद सम ऑफ द स्कीम्स इन सम ऑफ द म्यूचुअल फंड. वो रिजिडनेस की वजह से आ जाता है कि इंक्लूडिंग लार्ज कैप एंड मल्टी कैप, दिस मिड कैप्स ऑल्सो, कि हमने एक टेम्पलेट बना दिया, इस टेम्पलेट के बाहर नहीं जाएंगे, राइट. विच मीन्स कि न्यू एज फिनटेक, न्यू एज कंज्यूमर टेक, राइट, इमर्जिंग थीम्स, उसमें हम या पीएसयू नहीं लेंगे ना, आज तक लिया, 20 साल में नहीं लिया, अभी भी नहीं लेंगे, राइट. हम डिफेंस को टच नहीं करेंगे, डिफेंस तो 15-20 पी पे धक्के खाता था, हम 40 कैसे दे दें, राइट, ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस, राइट. सेम कुड बी रेलवे फॉर दैट मैटर. So it just doesn't work like that. I think that's what the market has taught us in the last, especially in the last 5-6 years, कि there should be flexibility, and that pays, that helps in having that nimbleness to change the view on a stock, change the view on a theme. Template में थोड़ा change करें ताकि winning stocks, and obviously we also हम थोड़ा बहुत quant का भी role लेते हैं. We have an in-house quant engine which also helps us decide, take calls when we are confused between two names which are equally good. तो हमें वहां पे भी मदद मिलती है, या क्वांट इंजन हमें भी सेपरेटली अपने आप नाम थ्रो करता है. तो that is also one more reason. So I think to summarize, to summarize, whatever be the result on 4 June, the larger image or the larger tone or the direction should be of the market should be that we should trend up. And if you can request Amit to just put up that screen again, where we had summarized in 3 lines about where we think the market could head up, or where it could, whatever be the mandate, चाहे वो less than 272 हो, चाहे वो 2 से 325 हो, over a long term it should trend up. Intermittent volatility जरूर रहेगी, but going forward, it could be steady to positive returns. So thank you so much everyone for joining us today. To summarize, this is what we would like to say कि markets be like on June 4. ये सरकार या कोई और सरकार, नई सरकार या पुरानी सरकार, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे यार. That's the message that Nifty is currently telling us, and this is what Nifty's also taught us in the past. Direction wise, long term wealth creation banta rahega, and obviously we hope that there is steadiness, there is immediate stability after 4 June, whichever government, and may the best party win, may the best government take place in the parliament. Thank you so much, all the participants for joining us today in our live session, and feel free to subscribe to our YouTube channel, and do share, subscribe, and put your comments, even after this, and feel free to share it with your friends, colleagues, and fellow equity investors if you've liked the session, and would like to do more such sessions in the future again, and hopefully there in that some of those forums some stock specific भी बात जरूर करेंगे. And so with that, let me take your leave. Thank you so much, Naveen, all the people in the backend team, and thank you so much, Amay, and look forward to doing something similar sometime after 4 June, after the elections. Thank you. Goodbye.